Hello students, consider the above reaction. Now weight of benzoic acid is 6.1 gram and it is used to get 7.8 gram of metabromobenzoic acid. Percentage yield of product calculate करना है. Atomic masses are given. तो benzoic acid का molecular weight क्या होगा? Benzoic acid का फॉर्मूला है C6H5COOH. टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं? 7. टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 5 + 1 6. टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 2. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12. तो टोटल मास ऑफ कार्बन हो गया 7 × 12 प्लस टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 6 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 प्लस टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16. So this is equal to 122. So this is the molecular weight of benzoic acid. Similarly, molecular weight of metabromobenzoic acid. अब metabromobenzoic acid का molecular formula हो जाएगा C7H5O2Br. ये molecular formula हो जाएगा. तो इसमें number of carbon atoms हो गए 7. तो total weight of carbon हो जाएगा 7 × 12 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 5. टोटल वेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 5 × 1. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है 2. टोटल वेट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 2 × 16 प्लस नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इज 1. तो 1 × 80 and this will be equal to 201. Now from the balanced equation it can be seen that 1 mole of benzoic acid gives 1 mole of metabromobenzoic acid. We have to find moles of benzoic acid in 6.1 gram of benzoic acid. So moles of benzoic acid in 6.1 gram of benzoic acid will be 6.1 divided by molecular weight of benzoic acid that is 122. तो ये हो जाएगा 1/20 moles. So theoretically 1/20 moles of benzoic acid should give 1/20 moles of metabromobenzoic acid. Because 1 mole of benzoic acid 1 mole of metabromobenzoic acid दे रहा है. तो 1/20 moles of benzoic acid should give 1/20 moles of metabromobenzoic acid. तो ये हो जाएगा moles of metabromobenzoic acid, ये हो जाएगा 1/20 moles. तो weight of metabromobenzoic acid हो जाएगा moles of metabromobenzoic acid multiplied by molecular weight of metabromobenzoic acid. Molecular weight कितना है? 201. Now putting the value of moles of metabromobenzoic acid that is 1/20 into 201. तो ये हो गया weight of metabromobenzoic acid. This number of moles denotes the moles of metabromobenzoic acid. Now percentage yield का फॉर्मूला क्या होता है? Percentage yield का फॉर्मूला होता है actual weight which is formed divided by theoretical weight. तो actual weight जो है वो given है क्वेश्चन में that is 7.8 gram. The actual weight of metabromobenzoic acid formed कितना है? 7.8 gram divided by theoretical weight of metabromobenzoic acid formed is 201/20 grams. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो परसेंटेज यील्ड मिल जाएगा. The answer is 77.612% and which is approximately 78%. So answer here is 78%.